everybody, Assalamu alaikum. My name is Uzair Arbab, and I'm serving as the HR associate here at InvoZone for 1 year. And I welcome you all to another episode of The Perspective. So we have a very special episode, and we have a very interesting topic in this show, that is diversity and inclusion at workplace and how to build an equitable work environment. So for that, we have a very special and experienced guest. She is serving as the HR head at Intaglio System for more than 3 years, and she had an experience of 10 years in the industry. So first of all, I welcome you, Ms. Anam to the show. Thank you so much, Uzair, for inviting me. Can you please tell me something about yourself, your journey so far, the roadmap you followed during this journey? So basically, I've been in the industry for like 10 plus years, and I've been part of IT industry since the start of my career. I have started in IT industry as an HR person, and I have been part of organizational development, culture building, talent acquisition, training and development throughout my career. So this is something which I love a lot, and I love to be with people. I'm a people's person, so this is kind of my specialty, and this is what I enjoy to do. Let's get straight back to the topic. How do you define diversity and inclusion in a workplace? So basically, these two things go side by side. Diversity in itself means that having different kind of people, which could be one based on gender, आप उनको differentiate कर रहे होंगे. Second is based on maybe races, और अगर हम बहुत पाकिस्तान की definition में उसको देखें तो could be कि different university background से आ रहे हैं, कुछ privileged universities से आ रहे हैं बच्चे, कुछ big cities से आ रहे हैं, कुछ बहुत different kind of cities से आ रहे हैं जहाँ पे English communication में भी उतनी अच्छी नहीं है. So there is a difference between the individuals, but not based on the skill set. It is basically due to the difference in the backgrounds. So hence, this particular thing is called diversity, when you have different kind of people coming from different backgrounds, and inclusion is to include all these kind of people in your work environment. You should not say कि we are hiring or we are keeping one particular type of people in organization because these are our values. You should include all of them, train them together, and make them one family. Okay. In diverse environment, the difficulties exist. So what are the strategies you think that are effective in attracting that pool and then retaining that pool, the diverse pool? सो बेसिकली स्ट्रेटजीज में मेजर है आपका टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए. उसके लिए आपने जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ टारगेटिंग द मैसेज, जिसमें आपकी जॉब एड्स और जॉब की रिक्वायरमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप मैसेज को टारगेट करें. आप करियर फेज में जा रहे हो, आप सारी टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, प्रिविलेज एरिया से भी, अंडर प्रिविलेज एरिया से, बहावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, और कुड बी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद. सो यू आर टारगेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिटीज. हेंस यू कैन अवॉइड कि आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपका डाइवर्स कल्चर ना क्रिएट हो. सेकेंड इज क्रिएटिंग पॉलिसीज एज एन HR पर्सन which can promote diversity and inclusion. At the same time, offering flexible kind of working hours could be one strategy to promote diversity in workplace. Another could be having a diverse kind of leadership in the organization where people are not only top tier people are in the senior top management. There could be women, there could be men, there could be some old age people, there could be people from very top tier universities, and there could be people from maybe not so popular universities. So that could be one way. Perfect. जैसे आपने बात की कि ज्योमेट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है, हम जो भी अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं वहाँ से हम पूल लेके आ जाते हैं. सो व्हेन वी गेट देम इन द टीम, सो हाउ वुड यू इंश्योर दैट जो भी वो सारा एक पूल है उसको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और सेम लेवल ऑफ इंक्लूजन मिल रहा है? तो उसमें ये होता है कि वंस द पर्सन इज ऑन बोर्डेड, देन इट्स काइंड ऑफ कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट. तो आपने आपके करंट एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है, आपने उनको भी वर्कशॉप्स करानी है कि वो सब टाइप के लोगों के साथ इक्वली घुल मिल सके.
ठीक है, in simple words. I have people in my organization working from people who are from FATA या बहुत KP के उस side से हैं. Their language and communication is like that, which gives a hint of their mother tongue and all. But then हमारी मतलब people sitting in the organization, उन लोगों को idea है और हमने इतनी trainings कराई हुई है कि they know कि हमने सबको include करना है and all are together. ठीक है, उसमें if somebody lacks a soft skill, then yes, we can get them trained. ठीक है, तो that's HR's responsibility to have such kind of culture. Right. So एक ही आइडियल सिचुएशन है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ ऐसे मैनेज करनी है या ये चीज़ ऐसे अचीव होगी, बट समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ स्टिल एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल एक ऐसे एरिया का जो भी एम्प्लॉय है दैट इज़ इन द टीम एंड ही इज़ फेसिंग दैट काइंड ऑफ अनकॉन्शियस बायस. सो हाउ वुड यू मैनेज दैट अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, एंड देन हाउ वुड यू मैनेज? सो देखिए, उसमें मेजर पार्ट आपका प्ले करता है कि यू arrange a one-on-one session with that person. ठीक है, you actively listen to that person. You try to understand their problem. Then you try to understand what are the underlying problems जिसकी वजह से उसको ये bias feel हो रहा है. ठीक है, try to feel them that you have heard their problem and then try to come up with some productive solution for the problem. Involve leadership if necessary. ठीक है, इस सारे प्रोसेस में, एंड देन फॉलो अप, गिव देम फीडबैक एंड ट्राई टू इंश्योर एंड ट्राई टू गिव देम कॉन्फिडेंस दैट योर प्रॉब्लम इज बीइंग हर्ड. वी हैव टेकन सर्टेन एक्शन फॉर दैट problem and we have resolved your issue, hence they feel more valued and part of the organization. I guess जो भी मेजर सिटी से बिलोंग करते हैं, हमें उनके लिए भी ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज करनी चाहिए सो दैट एनी पर्सन हु कम्स इन द टीम फ्रॉम एनी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया, सो अगर हम ट्रेन उस साइड पे भी उनको करके देंगे सो इट विल बी अ बैलेंस फ्रॉम बोथ साइड्स. क्योंकि एक साइड पे हम पुश करेंगे कि जी क्या प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, कुछ भी हो, बट ऑन द अदर हैंड जो मेजर सिटीज़ के लोग हैं उनको ये नहीं पता कि हाउ वी विल इंक्लूड दोज पर्सन इन द टीम और हाउ दे विल फील वैल्यूड इन द टीम. सो आई गेस ये चीज़ है कि दोनों साइड्स पे हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए रादर देन पुशिंग ऑन वन साइड. हाँ नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री, बिकॉज ऑफ कोर्स जो तो अंडर प्रिविलेज से आ रहा है उसकी तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, लेकिन जो पहले प्रिविलेज सिटीज से बैठा हुआ है उसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मैंने अपने आप के उस जगह से नीचे स्टेप डाउन बेसिकली करके अगले को कैसे साथ लेके ऊपर चलना है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. What is the role of leadership in all that scenario or situation? How the leadership will foster that environment in which everyone feel valued and feel respected in the organization? देखें, हमारे मुल्क में तो स्पेशली कहते हैं कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द टॉप. ठीक है, सो लीडरशिप तो प्ले पाइवटल रोल बिकॉज दे आर द वंस हु आर सेटिंग अप द पेस. You as an HR, you as an people's company, you cannot make such a difference without the support of leadership. So they are the ones who have to lead by example. They are the ones who have to empower people. They are the ones who have to sit and actively listen, get feedback from people, maybe from very juniors. ठीक है, एक्टिव लिसनिंग है, फीडबैक है, उनसे लें, लोगों से लें और उसको इनकॉर्पोरेट करें इन मेकिंग पॉलिसीज. जस्ट डोंट सिट इन ऑफिसेज और मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं या CEO CHROs बैठे हुए हैं, दे आर डिसाइडिंग ऑन थिंग्स, दे डोंट इवन नो नीचे वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं या उनकी क्या चीज़ें हैं. या इवन इफ दे आर इन IT इंडस्ट्री मेजरली ज़्यादा जो चंक है वो आपका मेल मेंबर्स का है इन द टॉप लीडरशिप. विमेन नहीं है या कम है लीडरशिप में. ठीक है, तो वो विमेन की वॉइस उतनी ऊपर जा ही नहीं रही है. सो इफ यू ट्राई टू, इफ ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट विमेन इन द टॉप लीडरशिप, देन ऑफ कोर्स वो चीज़ नीचे वाले लोगों की भी सुनी जाएगी. Can you please share any kind of example of initiative you took to promote diversity and inclusion in your workplace? So, if I tell you about InvoZone, they took so many initiatives like to include intersex community. They signed an MOU with the DevSync. And similarly, we have 3 HODs who are female. So, can you please define or any sort of initiative you took during all your tenure? So basically, one major thing we did was, and I still practice that, we don't decide on if a person is of what religion. Even in sitting in Pakistan, हमारी on-site resources हैं. I have previously hired people who are Christian. I have
previously worked with people who are Indians, Hindus by religion. So we never ever think of religion of the person or sect of that person before hiring or at the time of hiring. And at the same time we make sure कि जो कंपनी का कल्चर है वो रिलीजन अनबाइस्ड हो. पीपल डोंट डिस्कस रिलीजन पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और मेरी इस कंपनी में भी, हमें पहले करियर में भी, वेन एवर वर्क एट सम ऑर्गेनाइजेशन, आई मेक दिस स्ट्रिक्ट रूल कि पॉलिटिकल or religious discussions are not allowed on the floors. We are all same people or we are working together. ठीक है. दूसरी एक जो चीज़ हमने की है, that is again one thing is कि trying to add more women in the top leadership, जहाँ पे women की जो रेशो है उसको हम इक्वेट कर सकें और उसको बेहतर कर सकें. तीसरी जो चीज़ है वो आपकी रिक्रूटमेंट में, एक तो JDs है. We haven't written ever JDs thinking of a man in my head के ये एक आदमी के लिए लिख रही हूँ क्योंकि वो लेट सीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो रात को बैठेगा तो वो इतना काम डिलीवर कर देगा. नो, JDs are based on a human. It could be man, it could be women. कोई भी वो काम कर सकता है. तीसरी जो आपकी एक और चीज़ जो मैंने की थी या हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. बिकॉज पाकिस्तान में, हमारे ओवरऑल दुनिया में भी, women are playing a lot of different roles in lives और उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू मैन. दे हैव टू मैनेज द होम. तो हम उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग रिमोटली. इवन एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग जॉब्स, majorly we work as a company who works on site only, but sometimes considering candidate बहुत अच्छा है, उसका skill set matching है उसके साथ, तो हम उन्हें remote job offer कर देते हैं या उन्हें कहते हैं आपने once a week सिर्फ office आना है to have collaborate with the team, rest of the time you can work from home, especially for female people. That's how we create equity कि भाई औरतों की भी count भी उतना रहे और देन ये कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल मिले. एंड देन देयर इज़ नो डिफरेंस इन द सैलरीज. मतलब एक अगर लेडी हैं और वो काम कर रही हैं, वो घर से काम कर रही है और एक सिमिलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में काम करे, तो दे आर बोथ आर बीइंग पेड इक्वल. यस, दैट्स परफेक्ट. और ये बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है जो कि हर उसमें ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं की जाती, ये प्रैक्टिस नहीं की जाती. स्पेसिफिकली हम IT इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो दे आर प्रमोटिंग दैट थिंग टू इंक्लूड वुमेन इन द लीडरशिप पोजीशंस. बट if we talk about other industries, so we can see that other specific difference के जो women हैं उनको वो level of job नहीं दिया जाता, या same level पे अगर एक man भी काम करे, women भी काम कर रहा है, तो जो financial benefits हैं या opportunities हैं वो इस तरह नहीं दी जाती. So that's really impressive. So now we will move towards the fun part of our show, that is the rapid fire. So Anam, you will have to answer rapidly. Okay, how much time do I have? You don't have a time to think, so you have to answer rapidly. So, my first question is, what is the one word you had hard time pronouncing? It's probably, I think I'm still saying it wrong. It's probably, I don't know. I always say it wrong. So, if not in HR, which department would you opt for? I would be model or fashion designer. Really impressive. Okay. It was very thought out. Okay. Experimental cooking or following recipes? So I don't love cooking, so it will be always experimental. Okay, it's irrelevant question then. Okay. If you were a TV character, which character you would be? I would be Anam. I want to be myself because I want to be maybe a fashion designer or a model. So I want to be myself. Okay. How can you tell someone that he or she is a nerd? Because of their glasses, or maybe they are wearing braces most of the times. So that's all for today. And thank you so much, Ms. Anam Jilani. And would you like to share any sort of ending notes? Thank you so much, Zaf, for inviting me. And I really love this idea. And it's really good of you that you guys are engaging with other people from the industry which are in the HR department and you are discussing about the issues. रिक्रूटमेंट है, आई हैव सीन यू लास्ट शो, रिक्रूटमेंट है या डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है या बाकी सब चीज़ें, तो इट्स नॉट ओनली हेल्पिंग यू बट इट इज़ हेल्पिंग मैसेज टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड एंड हाउ अदर कंपनीज आर डूइंग. सो आई थिंक इट्स रियली a great initiative. Thank you so much for inviting me. That's all from our side. I hope this episode was very insightful. So thank you so much. Stay tuned for the next episode.